Now our next topic is simple interest. In this video we will understand what is simple interest. As you have seen that there are lots of bank in our district Pithoragarh, and the work of bank is to give you what some extra amount that you deposit. If you have seen that when you have extra amount, extra money in your house, what your parent do, your parent take that amount and deposit that amount on the bank. Now what the bank do, bank give you some extra amount when you require that money. जब आपको उस मनी जो आपने मनी आपने डिपॉजिट करी है बैंक में कुछ टाइम के लिए, जब आप उसको आपको उस अमाउंट की उस मनी की जरूरत पड़ती है, आप बैंक के पास जाते हो तो बैंक ने आपको उस जो आपने अमाउंट जमा करे, मान के चलो आपने 2000 रुपीज जमा करा, you have deposited 2000 rupees, and after 2 years when you require this 2000 rupees, the bank is giving you some extra amount, that is 2020 rupees he is giving. So the how, what is this extra amount, जो extra amount आपको मिला हुआ है 20 रुपीज का, ये है क्या? This is basically your interest. ये क्या है? इंटरेस्ट है जो आपको, जब आपने इस अमाउंट को बैंक के पास रखा, बैंक ने आपको कुछ एक परसेंटेज बोला होगा, व्हेन यू कम आफ्टर 1 year और आफ्टर 2 year आई विल गिव यू 2% ऑफ इट. सो दैट परसेंटेज इज योर व्हाट रेट. वो आपका क्या, वो आपका रेट है, किस रेट पे आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है. एंड जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपको मिल रहा है व्हेन योर टाइम दैट इज ऑफ 2 year कंप्लीट्स, यू आर गेटिंग 2020 रुपीज. दिस 20 रुपीज इज योर बेसिकली इज योर व्हाट इंटरेस्ट. जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको अपने डिपॉजिट अमाउंट से में मिलता है, दैट इज योर व्हाट इंटरेस्ट. ये क्या होता है, आपका इंटरेस्ट होता है. उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट. सेम देयर इज अ पोस्ट ऑफिस ऑल्सो. आप देखते हो कि आपके घर में लॉट्स ऑफ आरडी एजेंट आते हैं. व्हाट द आरडी एजेंट इज डूइंग, दे आर टेकिंग द मनी, एक्स्ट्रा मनी दैट your family is having, they are depositing that amount to in the post office, and after the time period gets over of 5 years, then what they are giving the total amount जो है, total amount जैसे आपने 60,000 deposit किया है, so what they are giving more than 60,000 actually they are giving 65 or 70,000. so the extra amount जो आपको मिल रहा है, आपने जो पैसे डिपॉजिट करें उसमें से जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिल रहा है, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज बेसिकली योर व्हाट इंटरेस्ट. ये क्या होता है, आपका इंटरेस्ट. अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसा किया जाता है, जब आप किसी आरडी एजेंट से बात करते हो, यू आस्क मी व्हाट इज द इंटरेस्ट, आपको बोलते हैं व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट, आप उनसे पूछते हो इंटरेस्ट रेट क्या है, तो आपसे बोलते हैं आपको 3% मिलेगा अगर आप 2 years के लिए रखते हो, आपको 7% मिलेगा अगर आप 5 years के लिए रखते हो. सो तो ये जो परसेंटेज है, दिस इज योर बेसिकली द रेट, और इसको हम क्या बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं. एंड द टाइम ही सेइंग 2 साल के लिए रख रहे हो, 2 years के लिए रख रहे हो, 3 years के लिए रख रहे हो, तो दैट इज योर बेसिकली योर टाइम. एंड द अमाउंट यू आर डिपॉजिटिंग, सम आर टेकिंग 500 रुपीज, सम आर टेकिंग 10,000 रुपीज, सम आर टेकिंग 2,000 रुपीज. सो जो डिपॉजिट अमाउंट आप कर रहे हो, दैट इज योर व्हाट प्रिंसिपल. वो क्या है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट है. तो ऐसा ही कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज PTR अपॉन 100, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में अपने टाइम में किया था, पंडित तोताराम अपॉन व्हाट 100. तो दिस इज PTR अपॉन 100. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर SI विच इज सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PTR अपॉन 100, which P stands for principal, T stands for time, and R stands for rate, and upon 100. शॉर्ट फॉर्म क्या है, पंडित तोताराम अपॉन 100. नाउ दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट. ये आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है. बट व्हेन यू टेक आउट द मनी, तो आपको जो अपना प्रिंसिपल है वो भी चाहिए होगा और इंटरेस्ट भी चाहिए होगा. तो जो आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो सम होता है, दैट इज योर व्हाट अमाउंट. सो द अमाउंट इज इक्वल टू अ प्रिंसिपल, द मनी दैट यू आर डिपॉजिटिंग, प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिल रहा है, दैट इज योर व्हाट अमाउंट. नाउ P I have already told you this is principal, T is your time, and R is your what rate. Now we are going to solve some questions based on the concept of your what सिंपल इंटरेस्ट. वन मोर कीप इन माइंड, ये केवल डिपॉजिट के लिए नहीं यूज होगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला. दिस इज ऑल्सो यूज व्हेन यू नीड सम मनी एंड यू आर नॉट हैविंग दैट. सो व्हाट यू डू, यू गो टू द बैंक एंड आस्क फॉर द लोन. सो व्हाट बैंक गिव, द बैंक लेंड्स यू सम मनी. आपको कर्ज में क्या मिलता है, कुछ अमाउंट देता है, 1,50,000 एंड व्हेन यू रिटर्न दैट अमाउंट, यू आर गिविंग व्हाट एक्स्ट्रा. आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करोगे. अगर आप 1 लाख रहे हो तो आपने 1 लाख बैंक से दिया, तो आप 1 लाख ही रिटर्न नहीं करोगे, 1 लाख से कुछ ज्यादा अमाउंट एक्स्ट्रा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा. दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज बेसिकली योर व्हाट इंटरेस्ट. डिपॉजिट इन में नहीं मिलता आपको इंटरेस्ट. व्हेन यू टेक मनी फ्रॉम, when you lend money or you borrow money from your bank, from any bank, then
बैंक ऑल्सो चार्ज सम इंटरेस्ट, दैट इज योर वर्ड सिंपल इंटरेस्ट. वो क्या होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट in your exercise 8.3. So let us move to the exercise 8.3, question number 9. Now this is the question number 9 of your exercise 8.3, which says find the amount paid at the end of 3 years. In each case, A part, principal is your 1200 at 12% per annum. So in this question you have to find out the amount that will be paid after the end of 3 years. 3 ईयर के बाद जब आपने प्रिंसिपल 1200 रुपीज डिपॉजिट किया हुआ है एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम. 12% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे आपने 1200 रुपीज डिपॉजिट किया किसी बैंक में, एंड आफ्टर 3 ईयर व्हाट विल बी द अमाउंट यू आर गोइंग टू रिसीव, दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग. एंड व्हाट इज गिवन टू अस, प्रिंसिपल इज गिवन टू यू, पी इज गिवन टू यू हाउ मच, रुपीज 1200, and rate is given to you 12%, and the time for the each case, that is A part and B part, the time is you are given what, 3 years. T is given to you 3 years, and आपको पूछ रहा है amount, you have to tell the amount, and you know amount is equals to basically your principal plus simple interest. So for finding out the amount you should know what is your simple interest and what is your principal. So principal is given to you, simple interest you don't know. So first of all we will calculate the simple interest, that is SI. So SI, you know the formula is PTR upon 100, where this P is your principal which is given to you 1200, and T is your time, that is 3 years, and the rate, that is 12% given to you upon 100. So now ये 0 से 0 cancel, ये 0 से ये 0 cancel. We are having 12 multiply 3, that is 36 multiply 12. So this is 144 multiply 3, which is equals to 12 multiply 12 is to 144. Therefore I multiply this 144 by 3. 3 4s are 12, carry 1, 3 4s are 12, 1 13, 3 1s are 3. So we are getting 432. This 432 is your what, simple interest. ये क्या आपका एक्स्ट्रा अमाउंट आपको कितना मिलेगा 3 साल बाद, that is 432 extra amount that you will receive. And we know that amount is equals to, amount क्या होता है, amount is equals to basically your principal plus SI. So हमारे principal given है, that is rupees 1200, and SI we are getting, this is 432. So when we add these two, so this is 0 plus 2 is 2, 0 plus 3 is 3, 2 plus 4 is your 6, and 1 ka 1. So we are getting 1632 after 3 year when we deposit 1200 at the rate of 12% per annum for 3 years. So I hope you understood the concept of simple interest in question number 9. So the B part of question number 9 you will do by yourself as a homework. Now we will move to the 10th part, 10th question of your exercise 8.3. Now the question number 10 says, what rate gives rupees 280 as an interest on a sum of rupees 56,000 in 2 years? This question is asking what is the rate if we are getting simple interest of 280 on the principal, that is 56,000 in 2 years. So in this question what is given to us, we have been given SI, that is 280 rupees. This is given to us, and principal, that is P, is given to us how much, rupees 56,000. And time, that is given to us 2 years, and we have been asked the rate, at what rate this principal has been put for 2 years, so that the simple interest, the SI we are getting is 280. This rate we have to find out. So we know that SI is equals to what, this is P multiply T multiply R, Pandit Totaram, upon 100. So P is 56,000, SI is your 280, and P is 56,000, T is 2, and R you don't know. In place of R I am writing rate, I am writing R only, and upon 100. So the 0 से 0 cancel, 0 से 0 cancel. What we are getting? We are getting 280 equals to 560 multiply 2 multiply R.
So this will be equals to r equals to क्या हो जाएगा बेटा, r will be equals to what, 280 upon 560 upon में 2. So this 0 से 0 cancel, 28 ones are 28, 28 twos are your 56. So r we are getting, r will be equals to what, 1 upon 2 multiply 2, that is 4. So rate is 1 upon 4%. 1 upon 4% का क्या आपका interest rate है when we are getting simple interest of 280 on the principal of 56,000 for time period 2 years. This question we have understood in our simple equation type when we are having these two. So ये क्या हो जाएगा, जो r के साथ जो कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई में नंबर्स है वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा of the number which is there on the other side. So this is 280 upon में 560 multiplied 2. 0 से 0 कैंसिल हो गया, 28 1 28, 28 2 का कितना होता है आपका 56. So this is 1 upon में 2 multiplied 2, that is 4. So r is coming equals to what, 1 upon 4%. I hope you understood question number 10 base. Now we will move to the 11th question of your exercise 8.3. Now this is the 11th question, which says if Meena gives an interest of rupees 45 for 1 year at 9% rate per annum, what is the sum she has borrowed? मीना ने एक अमाउंट बोरो किया है, कर्ज में लिया हुआ है, जिसमें उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है रुपीज़ 45 रुपीज़ का आफ्टर 1 ईयर टाइम, when he takes that amount for the rate of 9% पर एनम. 9% पर एनम से उसने एक अमाउंट कर्ज लिया हुआ है, उसमें उसको इंटरेस्ट पे करना है आफ्टर 1 ईयर. हाउ मच, दैट इज रुपीज़ 45. एंड यू हैव बीन आस्क्ड व्हाट अमाउंट शी हैज बोरोड, उसने कितने अमाउंट का कर्ज लिया हुआ है, दैट ही इज आस्किंग. सो वी हैव बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, वी हैव बीन गिवन एसआई, सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन टू यू, दैट इज रुपीज़ 45 रुपीज़ का आपको गिवन है. एंड वी हैव बीन गिवन टाइम ऑल्सो, एंड द टाइम इज योर व्हाट, 1 ईयर का आपको टाइम दिया हुआ है. The rate is also given to you, that is 9%. And we have been asked the principal, the amount she has borrowed. The principal we have to find out, that is P we have to find out. So we know that simple interest, that is SI is equals to what? P T R upon 100. So on placing the values in this formula, we would be able to find out the principal. So SI is how much? 45 is equals to P we don't know, so instead of V I am writing again P only. So T is your 1 year and rate is your what, 9 upon में but 100. So this is your 45 equals to P multiply 1 multiply 9. So P multiply 1 is your what, P only, P multiply 9 is your 9P. So this is 45 equals to what, 9P upon what, 100. अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, नथिंग इज देयर इन द डिनोमिनेटर ऑफ 45, सो देयर विल बी 1, मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस बिकम्स योर व्हाट, 9p multiply 1 equals to 45 multiply 100. So this is 9p multiply 1 is your 9p only, so I am writing this as 9p equals to 45 multiply 100. So p will be equals to what, 45 multiply 100 upon what, 9. So this will be 9 ones are 9, 9 5s are 45. So p will be equals to what, 5 multiply 100, that is rupees 500. So 500 rupees has been borrowed by Meena, and the interest he is paying is 45 when he takes the money for 1 year at the rate of 9% per annum. So the principal amount borrowed will be equals to what, amount borrowed is equals to कितना amount borrow किया गया है मीना ने, that is rupees 500. I hope you understood the concept of question number 11 also. So the homework for today, आज का homework है पेज नंबर 170. Try these question 1, 2, 3 and 4. This is totally based on the concept of simple interest, and the questions, similar questions we have discussed in this video class. So with this we finish up today's class. That's all for today. Have a good day. Thank you. Jai Hind.